A repeat of last year's final. A repeat of the opening fixture of season 2. It's the unbeaten Maji Mumbai up against the Tigers of Kolkata. Talk about Rajat Munde at the top of the order. Amit Naik, Yogesh Pankar comes in. Talk about Tigers of Kolkata, only one win to show from their efforts. So everyone will have to contribute to the team's cause. So that's the update from the centre here. Maji Mumbai have won the toss and they have decided to bowl first. फिलहाल हरदीप सिंह यहाँ पर ओपन करने आए हैं और लेफ्ट हैंडर हैं. सरफराज खान की ताबड़तोड़ इनिंग देखी पिछले मैच में 11 गेंद में 40 रन. Mumbai had won the toss and they've decided to field first. Rajendra Singh is going to be bowling the first one. Intent is clear. Oh, direct hit is gone. A throw to the bowler also would have made more sense. Wicket, soft dismissal at the end. The pressure was building up. Something was boiling up. There comes the first one. बांध के रखा था टाइगर तो कोलकाता के बैटर्स को. 1 रन बनाए 7 गेंदों पे हरदीप ने. कोलकाता 1 पे 1. Mayuddin Sheikh comes in. बारी किनारा आगे गिर गई. मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा होता ना, मैं समझ जाता आप थाने से. Whenever we show anything from Thane, you get excited, and why should you not? He's picked up a wicket, given away 6 runs, and this time make it 2 wickets. Low full toss, Moeen Sheikh looking to clear the long on boundary, but the captain has placed himself there. And that's Vijay Paule making no mistake. Second wicket for Mumbai, second wicket for Ankur. मुन्ना शेख 7 रन बनाया 8 बॉलों में. 13 पर 2 अब 4. So in comes the captain, Fardeen Qazi, जो आज के कप्तान है टाइगर्स ऑफ कोलकाता के. बड़ी appeal, the ball singing and given. Oh yes, with the ISPL ball over, it was at 120 Ks and they have immediately asked for the review. चलिए देख लेते हैं. Oh yes, मुनीफा जी, perfect call today. Impact outside the off stump. जी हाँ, लेकिन वो जो इम्पैक्ट हुआ है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उसकी वजह से डिसीजन बदलना पड़ा अंपायर को. And they've got this man who starts the onslaught. Yesterday, it was colossal. The first boundary of the match comes after more than 30 deliveries. And it's a 6 from Sarfraz. Oh, has he got any bat on it? If not, that's a goner. Up goes the finger. Rajendra says, don't worry, let them appeal, let them go upstairs. Oh, by the closest of margins, umpire's call. And that is an unfortunate one for the batter. And the danger man, Sarfraz Khan, has to go 14 of 14. And Kolkata slump even further. It's 26 for 3. Danger man departs and in comes Prathamesh Thakre. The best of 23, that strike rate pretty handy. That's the signal for the 50-50 challenge over. बहुत बारे काम कर चुके हैं. विजय के हाथ में गेंद और विकेट ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता. चल के अंदर आए और स्टंप के बाहर लाइन को कवर करने का प्रयास था और सीधा स्टंप पे. विजय बहुत चालाक और चतुर गेंदबाज है भाई. And that is another low score, unfortunately, for Prathamesh Thakre. 29 for 4 now. Kolkata is in walks Bhavesh Pawar. 4 विकेटें मारी थी, वो 50-50 चैलेंज हो डाला था उन्होंने. यहाँ पे एक की मांग है, यहाँ विकेट जाएगा. रनआउट के जरिए आउट हुए भावेश, जो अच्छे बल्लेबाज है, बड़े शॉट मारने की काबिलियत है इनमें. पर यहाँ पे काजी भागे, भावेश रुके. हाँ ना विकेट गवाई. Bhavesh goes for a duck and Kolkata now 30 for 5 in all sorts of trouble. And that's absolutely inch perfect from Vijay Paule. And that means they need 7 off the last ball. No knocker there. It's a mock-up for the fielder. And what a catch diving forward.
Ankur Singh. That is one of the better grabs you'll see this season. Running in from long on. And he gets the danger man, Fardeen Qazi. And there's more trouble brewing for Kolkata. 5 पे आउट हुए काजी, 31 पे 6 कोलकाता. In walks Vivek Mohan with Kolkata in even more despair. Starts with a full delivery. It's up in the air. Another opportunity for a good grab. And that's very, very nicely taken by Amit Naik. Running back, judges it beautifully and gets under that high ball. And another wicket falls cheaply for Kolkata. नवाज आउट हुए एक बना के, 31 पे 7. 31 for 7. Imroz Khan. Oh, opportunity, but instead plays it well to the right of short third man. And finally, a boundary after 12 deliveries. ओह फिलहाल गेंद कहां भेजी है, सीधा हाथों में. विकेट नंबर 8. अंकुर, कोई गलती नहीं. क्या बात है अभिषेक गलोर, जब भी आते हैं अपने कप्तान को विकेट्स देके देते हैं. विवेक मोहन को 42 पर आउट. Wicket! Yes, it is. Thickest outside edge. Straight into the hands of the wicketkeeper. No mistake whatsoever. Another one bites the dust. 42 for 9. तो राहत की सांस कहीं है नहीं. जी हाँ, बिल्कुल सांस नहीं लेने दे रही है टीम. जब बैटिंग भी करते हैं तो भी बॉलर्स के लिए कोई मौका नहीं रहता है. कोई ना कोई आके हाथ खड़ा करके कहता है आज मैं करके जाऊंगा अपनी टीम के लिए. और 10 ओवर समाप्त हुए. टारगेट कितना मिला? केवल 45 रन का. 44 पर 9 बनाया स्कोर कोलकाता की टीम ने. कितना टारगेट है अनवेल कर रहे हैं आपके लिए? 45. सिंपल है. मोहम्मद नदीम. इस ओपनिंग माजी मुंबई के लिए मोहम्मद नदीम है. उन्हीं के साथ साथ रजत मुंडे भी है. फिरदौस आलम. Generally, we've seen him bowl the second over, but this time around, Tigers of Kolkata need their best to start. चलिए आराम से. गेंदबाज कह रहे हैं, बल्लेबाज कह रहे हैं या रजत मुंडे कह रहे हैं. मुनीबा, क्या होगा? माजी मुंबई क्या सोच रहे होंगे? Let's finish it early. बड़ी शॉट लगाने की कोशिश, हवा में बेहतरीन कैच. क्या बात है भावेश, वेल जज्ड कैच. ये बड़ी मुश्किल कैच थी, लेकिन इसमें जब स्लो मो में देखेंगे एक चीज देखेगा, उनका सिर कितना स्टेडी था. नदीम ने बनाए 2 रन, 5 पर 1. So Yogesh Paintkar is back in the first season for Maji Mumbai. Was the captain. Full toss, बारी किनारा, beats the keeper, beats the short third, 4 runs. 2 ओवर के बाद माजी मुंबई 12 पे. लेंथ को सही से पिक किया. बहुत आगे लेंथ इतना आसान होता नहीं है शॉट मारना, और सिर्फ टाइम दिखाया कि किस दिशा में इस शॉट को खेलना है. That's up in the air. Thick edge. Fielder underneath it and says thank you very much. That's the end of Yogesh Paintkar. माजी मुंबई 21 पे 2. In comes Birendra Ram. He's had a swipe at that, but wow, has he connected it? That's gone the distance, and such is the power of Rajat Munde. Munde Mania is well and truly back. And guess what? We've got ourselves the 50-50 challenge over. Oh, that's gone up. 2 fielders in the deep. Surely this one will be taken. Oh, would you believe it? What is happening, Kolkata? What is happening, Mumbai? Rajat Munde. It is all happening here in Thane. कैच छूटा, वहां पे वो डर गया कि भाई ये तो आसान सा कैच है, फील्डर आराम से पकड़ लेगा, तो आराम से वो जॉग कर रहे थे और रनआउट के जरिए वो बाहर जाना पड़ेगा. तालमेल में कमी और अपना विकेट गंवाया रजत ने. यहाँ पे देखें आप, Abhishek Galore walks in.
And guess what? There we go. Virendra Ram has his highest score in the ISPL. And he has his first 6 of his ISPL career as well. Here we go. That's what I've waited for. Now over the offside. He's got a lot on that. Oh, would have been a fabulous catch on the run. Virendra wants 2. Wow, what's going on, Mumbai? They need 2 from this delivery. And they've only taken the single. So guess what? The 50-50 challenge over will be lost by Maji Mumbai. And in the end, the 50-50 challenge over goes the way of Kolkata. -4. And so Mumbai will have runs subtracted. It's now 35 for 3 from 6. बल्ले पे बॉल लगी, हाँ भाई लगी है, क्या गेंद थी, पड़ के बाहर गई, कॉट बिहाइंड, अच्छा कैच हुआ काजी दोहरा. Fantastic delivery from Shivam. Virendra Ram goes for 9 and Mumbai now 36 for 4. Amit Naik, पहली गेंद, आड़ा बल्ला और सीधा शॉट. चलिए, that's his natural game. और खाता खोलना हो तो स्टाइल में फिर से नेचुरल गेम दिखा दिया अमित नाइक ने. Just 1 run to win. Oh, that was quick. Wow. शिवम, ये पेस कहां से जनरेट किया आपने? 148.5 की स्पीड से आई थी ये गेंद. ये goes for it. Fielder there, taken. Oh, so wickets are falling. It's a no ball. Oh, lot of excitement here. So it's a no ball. That means that'll be 1 run. और चलिए, game set and match then. Just 1 run was needed. It's an on-field decision given of a no ball. The umpire saying no ball. इसका मतलब victory for Maji Mumbai. So that's the match summary. Tigers of Kolkata were put into bat. 10 overs, 44 for 9s. Maji Mumbai chased it in 6.4. There we go. Maji Mumbai win by 6 wickets. Convincing victory yet again for Maji Mumbai.